which is a left-wing student organization, All India Student Association, which is now out in the streets registering its protest as far as the Agnipath scheme is concerned. So, ISA, which is the All India Student Association, a left-wing student body, which is now out on the streets of the national capital registering its protest. It is, you can see those images. We'll try and connect with some of our colleagues who are of course present over there, bringing us those live images from the ground at the moment. But protesters now hitting the streets in the national capital against the Agnipath scheme. They want the scheme to be withdrawn. They want the government to back down as far as the Agnipath scheme was concerned. Remember, it was only a few days ago that the government announced the Agnipath scheme at a mega press conference that was addressed by Defence Minister Rajnath Singh and the three service chiefs. The Defence Minister has come forward and has in fact tried to douse fires after many in fact raised their own apprehensions about the scheme and the future of the job aspirants into the armed forces. But clearly the protests are unabating. You can see protesters who've taken to the streets now in the national capital. The cops in fact forcefully evicting them from their protest site at the moment. You can see those protesters being taken away in buses. Let's try and listen to some of them. Okay. We'll try and connect with our colleagues over there who are on the ground, of course, bringing us those live images. But the Delhi police there, of course, dispersing the protesters, taking them away in buses. We're told that this protest has been organized by ISA, the All India Student Association, which is the student wing of the left parties. In fact, active across some of the universities in Delhi, like the Jawaharlal Nehru University. Some of those protesters over there, as you can see, being forcefully evicted from the protest site by the police. My colleague Tejshri is now joining me live from the protest site. Tejshri, if you can give us a sense of what is happening on the ground around you. Yes, definitely. I'm standing here at the ITO gate number 5 and I'll tell you that what kind of protest over here is going on. Many protesters have been detained by the Delhi police and see, this is the present current scenario over here. See, these are the visuals. These are the protesters protesting over here. They're sat down on the floor and just trying to make their point that they will not, tolerate the what the government is saying. The police personnel are not allowing them. They are detaining them. They are just holding placards in their hands. Sloganeering is going on. Chanting is going on. We'll just try and forward with them. क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह से protest करते हैं? जी? किस तरह से protest कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? ये शांति प्रदर्शन है हमारे उन लाखों युवाओं के लिए जो साल भर अपने खून पसीने की मेहनत से अपने सुबह 4 बजे से अपनी मेहनत करते हैं, लगातार सालों साल प्रयास करते हैं। नहीं चलेगी जब तक हमें ये लोग पुलिस लोग इजाजत है जब तक रहेंगे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो बोलेंगे उतने देर तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करेंगे। So see, these people, again they are trying to detain these people. Camera person Mridul is showing you the visuals. See, these are the paramilitary forces, CRPF Jawans, which are trying to vacate this area, and the protesters are being detained by the police officers. These are the banners which they are holding in their hand. And there was again a protest by ISA a while back, but the ISA protesters have already been detained a while back. And these are the protesters. I would like to show you the visuals again over here because protesters are gathering in a large number over here. Follow me and see.
as they are detaining, again the protesters are being detained. See, this is a massive scuffle that is going on between the police and the protesters. Protesters are being taken to the bus and they are being detained. They are trying to evacuate this area and they are trying to detain the protesters. It seems like protesters are very adamant and they are not going to leave this area. And there you see, they are just holding them and putting them in the bus. क्या कहते हैं? कब तक जारी रहेगा आपका? यही तो तरीका है जो चलो पूरी तरीके से ये सरकार युवाओं के रोजगार के ऊपर कब तक जारी रहेगा? मेरा नाम ये मोदी जी की तानाशाही है। हम युवा अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पर आए हैं। जो मोदी जी ने हम युवाओं के साथ ये खिलवाड़ किया है, हमारे भविष्य को खिलवाड़ किया है। अग्निपाथ वापस लो, अग्निपाथ वापस लो, क्या संदेश? These people are being detained right away in this vehicle and they are not allowed to protest over here at ITU. And this is not just only the bus which is which are detaining the protesters. There are many such buses and the vehicles deployed over here to detain the protesters so that the protests could not turn violent, because we are seeing that in many parts of the country protests are turning violent. वापस लो, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ वापस लो, अग्निपथ। They are just lying down on the floor and saying that they are not going to leave this protest. Okay, that is my colleague Tejshri Purandare, who's in fact bringing us those live pictures from ITO in the national capital, where these protest organizations in fact have joined in with the voices. Tejshri, if you can speak to these people around you and get a sense of who these organizations are. Are they job seekers, job aspirants themselves, or these are associated organizations with political parties who are in fact staging this protest? And what is their argument when they say Agnipath Vapas Lo? Why? What is their argument? On it. Okay, we'll try and connect with my colleague Tejshri, who is of course in the midst of all of that chaos which is currently happening in the center of the national capital at ITO right now, where you can see these organizations like ISA, which is All India Students Association, a left-wing student body, which is one of the protesting organizations that has gathered over there, and the police of course dispersing the crowds from that protest site. They say they're lending support to the voice of job seekers who've been let down allegedly by the government with the Agnipath scheme. Tejshri, if you can hear me, just speak to some of those protesters and ask them why are they saying Agnipath Vapas Lo? Yeah. You see, most of the protesters have been detained and taken away, but there are a few who are still being in the process of detention, and we'll try to speak to them. आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र क्या है और आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि युवाओं के साथ ये सरकार रोजगार को लेके हमेशा खेल कर। लेकिन क्या आप उस दायरे में आते हैं? मैं दायरे में आऊँ ना आऊँ, मेरे बच्चे तो इस दायरे में आएंगे। कल को ये मेरे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके लिए मुझे आवाज उठानी पड़ेगी। आपके प्रोटेस्ट करने की वजह क्या है? आप किसी और के लिए आवाज उठा रहे हैं? हम संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की तरफ से कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट। तो आप उस दायरे में आते हैं जिसके लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं आता हूँ इस दायरे में, लेकिन ये खिलवाड़ मेरे साथ पहले हो चुका है, क्योंकि भैया उम्र ओवर एज हो चुकी है। ओवर एज वालों को कहाँ ले जाएंगे? इनके पास क्या विकल्प है? रोजगार आधारित कानून क्यों नहीं बनाया गया आज तक? कोई नीति नहीं है रोजगार। What these people are trying to make a point is, and we ask them, that these people do not fall in the category in which the Agnipath law mentions. But what they are trying to say is they are speaking up for the youngsters of India is what point they are trying to make. We'll ask to again all these protesters. आप क्या करते हैं? मेरा नाम मनोज कुमार, मैं CYSS से हूँ। हमारा प्रोफेशन क्या है? मैं लॉ कर रहा हूँ। आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, मैं परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ जब खेला जाएगा तो हर एक युवा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सड़क पर आए और अपने लोगों के लिए लड़े।
ऐसा नहीं है कि बस आप ही कर रहे हैं तो आप ही लड़ेंगे। लेकिन 17.5 से 21 जो उम्र तय की गई है वो तो सरकार द्वारा की गई है, 17.5 से 21। तो ये आते हैं उस दायरे में? बिल्कुल आता हूँ, मेरी 21 साल उम्र है, मैं नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल मैं चाहूंगा करना। What is the problem with the Agnipath scheme? Ask them what is the problem with the scheme. आप 4 साल के लिए मजाक नहीं कर सकते किसी के साथ, जैसे पहला चल रहा था। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं देश को। Yes. Ask them for their specific arguments, Stage 3. If you can still manage to speak to some of those protesters, ask them for their specific arguments. What are their arguments against the scheme? The option, this is another scheme which is available, a short-term recruitment scheme. Permanent commissions are still available. Okay, we'll try and collect with my colleague Tejshri over there. Of course, she was trying to speak to some of those protesters. These are people who are lending support to protesters across the country. They're saying that these are from various organizations like ISA and CYSS, as one of those in fact being detained by the police, had said as well that we are lending our voice to those protesters. We are in fact speaking for the youth of the country. The government should withdraw the Agnipath scheme. Those are images that are coming in from the national capital, where some of these organizations had in fact gathered to protest against the Agnipath scheme, them having been detained by Delhi police and taken away in buses at the moment. But some violent protests that have broken out across the country. As you can see, images there from Varanasi. Earlier we were showing you images of buses which had been in fact damaged by protesters. Stones had been hurled at those buses and their windows had been broken. Now you can see cops over there out on the streets trying to contain the situation as protesters try to run amok. You can see those images of the cops trying to contain the situation. Multiple images that we've been bringing to you from across specifically the states of Uttar Pradesh and Bihar, and some from Telangana, Secunderabad to be specific. Let's listen in to my colleague Ram Kinkar, who's reporting from ITU in Delhi. देखिए ये मांग है छात्रों की, और अलग अलग जो उत्तर प्रदेश बिहार के बाद से दिल्ली में ये आंदोलन पहुंचा है, और संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति जो है इसका नेतृत्व कर रहा है। आईसा और लेफ्ट के तमाम जो स्टूडेंट विंग है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जो गेट नंबर 5 का मेट्रो स्टेशन है वहां पर पहले से ही पुलिस मौजूद थी, और पुलिस ने बाकायदा जैसे ही वो वहां पर पहुंचे हैं हाथों में प्लेकार्ड लेकर, और साथ ही साथ जो मिलिट्री में नया अपॉइंटमेंट को लेकर उनका विरोध था यहीं पर वो खड़े हुए हैं। ऐसे में पुलिस ने पहले ही यहाँ पर बनाया हुआ है, आप देखिए उनके हाथों में ये प्लेकार्ड है, और साफ तौर पर उनमें कह रहे हैं कि 4 साल की संविदा पर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ है। यानी जो अग्निपथ की स्थिति है वो दरअसल एक आग का रास्ता ही होता जा रहा है, और यही वजह है कि पुलिस ने इस 5 नंबर गेट पर अपनी मौजूदगी बना ली है। और साफ तौर पर जैसे जैसे टुकड़ियों में आते हैं ये छात्र, और जगहों के अपेक्षाकृत यहाँ पर जो आंदोलन में अंतर दिख रहा है वो ये कि टुकड़ियों में आते हैं, और उसके बाद जैसे ही कुछ ग्रुप को, प्रोटेस्टर्स को, आंदोलनकारियों को बस में बिठाकर डिटेन किया जाता है, तुरंत दूसरा ग्रुप पहुंच जाता है, इससे पहले कि पुलिस समझ पाती। यही वजह है कि आप देखिए कि सीआरपी के समेत जो तमाम दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो परमिशन ली गई थी तकरीबन 500 प्रोटेस्टर्स के यहाँ पर पहुंचने की थी, सैकड़ों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और बाकायदा आप देखिए कि पुलिस के जवान खुद यहाँ पर मौजूद हैं, और बाकायदा जब ये यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक जो सारे आंदोलनकारी हैं, जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से हट नहीं जाते। और यही वजह है कि इस मेट्रो स्टेशन के गेट पर फिलहाल आप देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी है, साथ ही साथ सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं, और यह देख रहे हैं कि कहीं कोई आंदोलनकारी यहाँ पर न पहुंचे, और साथ ही साथ मेट्रो में अंदर आने जाने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और साफ तौर पर आप देखिए, और यहाँ पर देखिए अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, और जो भी लोग पहुंच रहे हैं ऐसे में जो अगर मेट्रो स्टेशन का रुख करते हैं तो उन्हें यहाँ पर दिक्कत होगी, और यही वजह है कि जो पुलिस की मौजूदगी है वो लगातार देखिए शटर गिर रहा है, यानी पर इस वक्त अगर कोई आईटीओ तरफ आ रहा है, यानी आईटीओ एक इंटरचेंज स्टेशन भी होगा, और यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 से फिलहाल एंट्री बंद कर दी गई है। ताजा अपडेट यही है, और दिल्ली पुलिस के जवानों ने यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है और किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरह से अग्निपथ का ये मसला लगातार बढ़ रहा है,
किसी को अंदाजा नहीं था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से होते हुए वो यहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि परमानेंट बेसिस पर जो नौकरियां हैं वह लाई जानी चाहिए, बनिस्बत इसके कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और उसके बाद से उन्हें कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में उन्हें लगता है कि परमानेंट बेसिस पर अगर ये होता तो अच्छा होता, और यही वजह है कि अपनी अलग अलग मांगों के जरिए वो यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आपको बता दें कि आंदोलनकारी कई छात्र यहाँ पर पहुंचे हैं और सैकड़ों की संख्या में उन्हें डिटेन करके ले जाया गया है। पुलिस सीआईएसएफ के जवानों से मंत्रणा कर रही है। गेट नंबर 5 पर फिलहाल एंट्री नहीं है और यहाँ पर एंट्री को फिलहाल रोक दिया गया है ताकि कोई आम अंदर भी न जा सके। Right, so Ram Kinkar there, of course, reporting from ITO saying that gate number 5 of the ITO metro station has now been shut down because most of the protesters, in fact, affiliated with various student bodies, in fact, of political parties, had reached the protest site and were coming in from that metro gate, and hence the police has now shut down that gate. Let's listen in to reactions. सब आर्मी के बारे में समझता है, परमिशन हमने दे दी थी। मैंने यहाँ पे मॉरिस नगर थाने में इंटीमेशन दिया था, उसके बावजूद भी ये पुलिस वाले इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं। जगह जगह मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंसा हमेशा से गलत है। हम महात्मा गांधी के आदर्श वाले लोग हैं, हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, ना कि यहाँ पर इस तरीके से छीन झपटी कर रहे थे। Right, you heard some voices over there coming in from the national capital at ITO, where protesters who are in fact those lending their support to the voices of protesters across the country who have in fact stepped out in order to register their anger over the Agnipath scheme. They have been detained by Delhi police, some of them belonging to the ISA group, which is the All India Student Association, a student body associated with the left parties. There was CYSS as well, Chhatra Yuva Sangharsh Samiti, affiliated with the Aam Aadmi Party. Remember, Arvind Kejriwal has also lent his support to the voices of the protesting youth. Let's listen into Ram again. के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू की, हाथों में प्लेकार्ड लेकर वो जैसे ही यहाँ पर पहुंचे, पुलिसकर्मी पहले से ही मौजूद थे, उन्होंने प्लेकार्ड्स को हाथों में लिया और उसके बाद से उन्हें एक बस में भरकर जो है दूर कहीं ले गए और डिटेन कर लिया। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी अभी मौके पर मौजूद हैं, दरअसल ये प्रदर्शनकारी अलग अलग टुकड़ियों में आते हैं, अलग अलग टुकड़ी में आकर ये प्रदर्शन करते हैं। जैसे ही पुलिस का एक ग्रुप उन्हें डिटेन कर लेता है, अचानक से दूसरी टुकड़ी आ जाती है और उसके बाद से वह प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ऐसे में पुलिस भी अलग अलग तरीके से काम कर रही है। यहाँ पर देखिए कि टो अवे की स्थिति भी बनाई गई है कि अगर यहाँ पर किसी गाड़ी की वजह से ट्रैफिक को दिक्कत होती है तो उसे टो अवे भी किया जाए। और साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी है वो तकरीबन सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि परमिशन 500 से ज्यादा की थी। और यही वजह है कि पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और ये देख रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने न पाए, इलाके में ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे। यही वजह है कि आईटीओ के गेट नंबर 5 पर लगातार सुबह से ही दिल्ली पुलिस के तमाम जवान मौजूद हैं और सीआरपी के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो और राज्य में घटनाएं हो रही हैं उससे सबक लेते हुए यह दिल्ली पुलिस लगातार चौकस है और हाई अलर्ट पर है कि इस तरह की कोई भी स्थिति न होने पाए कि कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती मिले। हालांकि उन्होंने प्रदर्शन किया और जैसे ही वो प्रदर्शन के लिए खड़े ही हुए थे कि अचानक से पुलिस के जवान पहुंचे हैं और उन्होंने उन्हें अपने डिटेन कर लिया और बसों में भरकर दूर कहीं पर ले गए। और अब देखिए पुलिस की स्थिति यहीं पर लगातार बनी रहेगी। और अभी तक की जो स्थिति ये है कि संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति के बैनर तले ये हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो सीआरपी की टुकड़ी भी वो पूरी तरह से यहाँ पर तैनात है और इन्हीं टुकड़ियों की मदद से ही जो है प्रोटेस्टर्स को फिलहाल यहाँ पर से हटाया गया है। और पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो और राज्यों में हो रहा है उस तरह की स्थिति दिल्ली में न होने पाए। और यही वजह है कि जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद और चौकस है। और साथ ही साथ चूंकि जुमे की नमाज भी है लिहाजा एक्स्ट्रा एहतियात बरता जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए।
और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि चूंकि जुमे की नमाज है, यही वजह है कि जो संवेदनशील इलाके हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है ताकि कहीं पर ऐसा न हो कि कुछ शरारती तत्व एक तरफ अग्निपथ के आंदोलन का फायदा उठाएं और दूसरी तरफ जुमे की नमाज का और कुछ ऐसा करें जो कि और राज्यों में हो रहा है और वो सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती मिले। तो साफ तौर पर नेहा यही एक स्थिति है जो कि इस वक्त आईटीओ के गेट नंबर 5 पर है। तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। Right. So my colleague Ram was, of course, reporting on the current situation in ITO at the national capital. Tejshri Purandare, my colleague, is also standing by at the location. Tejshri, give us a sense of the ground situation right now. Has the police been able to contain the situation? See, a while back from now, there were protesters from ISA present over here at the gate number 5 of ITO who were holding placards in their hand protesting against the Agneepath. But then they were detained by the police, the Delhi police and the paramilitary forces was deployed over here because the ISA itself yesterday declared that they will be protesting here at ITO. So that is why there was a huge police deployment from 10 a.m. The protest started at around 11:15 and as soon as the protesters started gathering, there was a rise in number and then there was a major scuffle that broke out between the paramilitary forces and the ISA protesters as well. But now looking at the ground situation, I would like to show you the visuals over here. Camera person Manish Jha is showing you the visuals that this is the massive police deployment at the ITO. The paramilitary forces, the women police personals, the Delhi police are all deployed over here because, you know, anytime the condition could escalate and the protesters could turn violent because we are seeing that how the conditions are escalating in different parts of the country, majorly in Bihar. So that is why to control the situation, there's a huge police deployment over here. A while back from now, there were senior police officials over here taking the, taking a note of the ground situation over here, that what the ground situation is. But as of now, I would also like to show you that there was this was the same place where the this protesters came and they were detained. But since this is a complete very busy area, so that is why there was a huge traffic jam also over here. But you can see that there are also these senior police officials who are constantly... Right, so Tejshri there, of course, reporting from the national capital saying that the Delhi police is on high alert, ensuring that the situation doesn't get out of control.